Hello friends, welcome to the channel. Today we will do an important topic of the very new subject MEG 18 American Poetry for IGNOU students. We have already covered the previous video of this topic, an introduction to American poetry, themes and issues. आज हम जानेंगे English colonial expansion के बारे में. Most probably this one is going to be the compulsory question for MEG 18. These are the basic colonies. Colonial expansion के बारे में पूछा जाए तो you need to mention the Tobacco colony, the New England colony, the Middle colony, the Southern colony, and aftermaths to the Revolutionary War and Treaty of Paris. तो सबसे पहले बात करते हैं Tobacco colonies की. Tobacco colonies were those that lined the sea level coastal region of English North America known as Tidewater, extending from a small part of Delaware south. Here it is Delaware south से लेकर Virginia Albemarle Sound region North Carolina तक ये settlements थी. This is the part Delaware, Maryland, and the European demand for tobacco increased more than 10-folds. टोबैको इतना ज्यादा फेमस हो चुका था, इतना पॉपुलर था कि यूरोपियन टोबैको की डिमांड 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी एंड टोबैको बिकेम द स्टेपल क्रॉप ऑफ chesapeake बे रीजन. तो chesapeake बे रीजन में, ये chesapeake बे रीजन है, यहाँ पर एक स्टेपल क्रॉप बन गया था टोबैको. दैट इज व्हाई द कॉलोनीज वर कॉल्ड टोबैको कॉलोनीज. देखते हैं सबकी शुरुआत कैसे हुई. 1606 में लंदन कंपनी ने 3 शिप्स भेजे. नाम याद रखिए और एग्जाम में मेंशन करिए. द गॉडस्पीड, द डिस्कवरी एंड सुजेन कंटेंट. द लंदन कंपनी सेंट 144 लोगों को भेजा गया था वर्जीनिया इन दीज 3 शिप्स. 3 शिप्स, इनके नाम मैं आपको बता ही चुकी हूँ. गॉडस्पीड, डिस्कवरी एंड सुजेन कंटेंट विच accosted द chesapeake बे इन द स्प्रिंग ऑफ 1607. 1607 तक ट्रेन्स यहाँ पर शिप्स यहाँ तक पहुंच गए थे. They sailed about 60 miles up to the James River to construct their settlement, which they named Jamestown. अपनी settlement का नाम उन्होंने रखा Jamestown. The Jamestown colonists faced dire moments. ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ बहुत आसान रही होगी. Greedily engrossed in plundering gold and any other exportable resources, they paid no heed to feeding themselves or stocking their provision. उनका पूरा ध्यान था कि यहाँ के रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपने बिजनेस के लिए, यहाँ के गोल्ड को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि हमें कुछ प्रोविजन अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करना है. By 1616, the settlers in Virginia developed the agricultural flair to cultivate tobacco. तो टोबैको एक प्रोडक्ट था जिसको इजीली ग्रो किया जा सकता है, इसलिए धीरे धीरे टोबैको की पॉपुलैरिटी बढ़ गई. अप्रोक्सीमेटली आई से जब उन्होंने सेटलमेंट की 1607 में, उसके 10 साल बाद बाय 1616 द सेटलर्स इन वर्जीनिया डेवलप द एग्रीकल्चर टू कल्टीवेट टोबैको. अब टोबैको ने इंश्योर कर दिया कि कॉलोनी का सर्वाइवल तो हो ही जाएगा. ऑल्दो वी नो दीज डेज दैट टोबैको इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, बट दे did not know it back at that point of time. So वर्जीनिया ने इसके बाद स्लेव ट्रेड भी करना शुरू कर दिया था. पहले टोबैको प्लांटेशन से शुरुआत की, उसके बाद स्लेव ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी. अब बात करेंगे न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज की. हैव अ लुक एट दिस मैप. द न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश अमेरिका इंक्लूडेड कनेक्टिकट कॉलोनी, द कॉलोनी ऑफ रोड आइलैंड and Providence Plantations, Massachusetts Bay Colony, Plymouth Colony, and province of New Hampshire, as well as a few smaller short-lived colonies. So this was the complete area which came under the New England colonies. Let us know something about the geography of the New England colonies. Because the soil here was very rocky और climate भी बहुत harsh था, colonists in New England only cultivated enough to feed their families. इतना उगाते थे कि अपनी families को खिला सके. Some of these crops included corns, beans and squash. Corn, beans, squash. And the New England colonies, however, were full of forests, giving the colonists the important natural resources of trees. These trees provided
provided wood that colonists were able to use to build homes, building ships, etc. So lumber or wood, I'll say, became very important to the shipbuilding industry because they built ships for the colonies, and the ships and lumber were also exported to England. Also, because the New England colonies were along the coastal area के पास थी ना, many colonists fished. तो फिशिंग भी एक important employment बन गया. The fishing industry included whaling and cod, among other types of fish. Whale oil was an important resource that was used as fuel for lamps. Electricity नहीं थी ना उन दिनों, and could also be sold. Because the New England colonies focused on the shipbuilding and fishing industries, they imported agricultural products, farm products from other colonies and England. So this was the geography. Thin rocky soil थी, harsh winters होती थी और short summers होती थी. So these were the major crops, as well as they were dependent upon wood and fishing. अब जानते हैं मिडिल कॉलोनीज के बारे में. ये जो येलो पार्ट है ना, दैट बिलोंग्स टू मिडिल कॉलोनीज. इसी को जूम करके दिखाया गया. न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी एंड डेलावेयर. The middle colonies were a subset of 13 colonies in British America located between New England colonies and Southern colonies. So ऊपर की colonies हमारी हो जाती हैं New England colonies और नीचे की colonies Southern colonies. The middle colonies were made up of New Jersey, New York, Pennsylvania, and Delaware, as I've shown you. They were located south of the New England colonies of New Hampshire, Massachusetts, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा ही है, Rhode Island, and Connecticut. The middle colonies were situated north of the southern colonies of Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia. इसकी बैक स्टोरी को भी जानते हैं थोड़ा सा. 1664, ये ईयर याद रखिए. In 1664, King Charles II, अगर आपने लिटरेचर को पढ़ा है तो रेस्टोरेशन पीरियड में पढ़ा होगा चार्ल्स II का नाम. King Charles II handed over the area between New England and Virginia, a significant section already occupied the Dutch patrons, to James, the Duke of York, his brother. तो चार्ल्स II ने ये एरिया अपने ब्रदर के नाम कर दिया. So in 1664, the English seized all the Dutch territory in America, parts of New Jersey, Delaware, Pennsylvania. The land was better for farming than in the New England colonies. New England में मैंने आपको बताया ना बहुत harsh weather था, but this land was better. The region produced enough wheat, corn, and other grains to feed the colonies with plenty left to export to England. जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज करती है ना, तो सबसे बड़ा पर्पस होता है कि यहाँ के रिसोर्सेज को अपनी कंट्री में ले जाया जाए. So King Charles II granted the land for the Pennsylvania colony to William Penn on March 4, 1681. अब किंग चार्ल्स II ने इस एरिया को दे दिया विलियम पेन को 1681 में as payment for debt the crown owed his family. तो विलियम पेन की फैमिली से कुछ उधार लिया हुआ था, कुछ कर्जा लिया हुआ था, उसको चुकाने के लिए चार्ल्स II ने ये सब एरिया विलियम पेन के नाम पर कर दिया. पेंसिल्वेनिया को ऐसे मिला अपना नाम. पेंसिल्वेनिया therefore or the Pennswoods was founded in the North American assets or estate of William Penn, this person. बात करते हैं सदर्न कॉलोनीज की. ऑल्दो प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं थोड़ा सा सदर्न कॉलोनीज के बारे में. दिस इज द zoomed version. Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia. The southern colonies within British America consisted of province of Maryland, the colony of Virginia, the province of Carolina, and province of Georgia. ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही important question हो सकता है आपके एग्जाम्स में. यहाँ की क्रॉप्स देखिए, टोबैको, इंडिगो, राइस, सभी बहुत ही प्रॉफिटेबल क्रॉप्स है. The colonies developed prosperous economies based on the cultivation of cash crops such as tobacco, indigo, and rice. An effect of the cultivation of these crops was presence of slavery in significantly higher proportions than in other parts of British America. स्लेव ट्रेड के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं स्लेव से रिलेटेड. एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई.
Many of the white masters or masters were actively indulged in the slave trade, commissioning, deracinating, auctioning, and exploiting the African people. इन चारों वर्ड्स को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं. कमीशनिंग मतलब ऑर्डर करना कि अब से हमारी ही कमांड चलेगी. डिरेसिनेटिंग का मतलब होता है कि किसी को अपरूट कर देना. आप एक जगह पर हजारों सालों से रह रहे हैं, लेकिन कोई बाहरी शक्ति आकर आपको वहां से हटाकर अपना राज करना शुरू कर देती है. दैट इज डिरेसिनेटिंग. ऑक्शनिंग यू नो एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑल्सो यू नो. ऑक्शन नीलामी करना, लोगों की नीलामी करना कहाँ तक सही है. दैट इज व्हाट वी कॉल द स्लेव ट्रेड. और एक्सप्लॉयट करना उनको ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि कोई ऑब्जेक्ट मानकर. अब जानते हैं रेवोल्यूशनरी वॉर के बारे में. बाय 1700 द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका विटनेस्ड 250,000 Europeans and African settlers in 13 English-based colonies. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. On the eve of revolution in 1775. रेवोल्यूशन का ईयर भी आप लोग जानिए. In 1775, a number of approximately 2.5 million settlers were surveyed, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ. Although they did not share much in common, given their cultural, linguistic और सोशल डिफरेंसेस, अलग अलग जगहों से आकर सेटल हुए थे ना. दे सक्सेसफुली यूनाइटेड देमसेल्व्स एज वन टू फाइट फॉर देयर इंडिपेंडेंस. तो उन्होंने अपने आप को यूनाइट किया, अपने आप को एक किया अपनी इंडिपेंडेंस के लिए. सो द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर, ऑल्सो नोन एज रेवोल्यूशनरी वॉर और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सेक्योर्ड अमेरिकन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन. So this fight began in April 1775, followed by the Lee Resolution on July 2nd, 1770. ली रेजोल्यूशन क्या था इसकी बात तो हम करेंगे ही. एंड ऑल ऑफ अस नो आई थिंक कि जुलाई 4 इज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका. जुलाई 4, 1776 टू बी प्रिसाइज. अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है. ऑल्दो seems like a bad handwriting, जिसको कोई केमिस्ट ही पढ़ सकता है, but I'll give it to you in clear one. Resolve that these united colonies are and of right ought to be free. इन colonies को अब free होना ही होना है. That they are absolved from all allegiance to the British Crown. अब British Crown का right नहीं है इस पर. And that all political connection between them and the state of Great Britain is ought to be totally dissolved. Great Britain के किसी भी तरीके के कंट्रोल को completely dissolve किया जाता है, खत्म किया जाता है. So this is something you are supposed to remember. अगर resolution में क्या लिखा था वो आप नहीं भी याद रख पाए तो do remember this. On June 1776, Richard Henry Lee of Virginia introduced this resolution in the Second Continental Congress proposing independence for the American colonies. और अमेरिका को इंडिपेंडेंस किस दिन मिला? जुलाई 4, 1776. याद रखिए इस डेट को, जुलाई 4, 1776. अब हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ अलायंस या ट्रीटी ऑफ पेरिस के बारे में. In September of that same year, 1776, the Continental Congress declared the United Colonies of America to be United States of America. The Treaty of Alliance, also known as Franco-American Treaty, was a defensive alliance Gathbandhan between the Kingdom of France and United States. Formed amid the American Revolutionary War with Great Britain, and it was signed by delegates of King Louis XVI and the Second Continental Congress in Paris on February 6, 1778. तो इंडिपेंडेंस किसने ऑर्गेनाइज की? फ्रांस ने. फ्रांस recognized the independence of the United States as dependent upon military victory. The treaty stipulated that the essential and direct end of the present defensive alliance is to maintain effectually the liberty, sovereignty, and independence absolute and unlimited of the said United States, as well in matters of government as of commerce. American colonies and France signed the military treaty on February 6, 1778. It formalized France's financial and military support of the revolutionary government in America. फ्रांस ने फाइनेंशियल लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर अमेरिका को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था. दिस ट्रीटी इज अ
proof of that, also called Treaty of Paris. So this is what the gist of journey from colonies to independence. By issuing the Declaration of Independence adopted by the Continental Congress on July 4, 1776, the 13 American colonies severed their political connections to Great Britain. ग्रेट ब्रिटेन से इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने अपने कनेक्शन को खत्म कर लिया और इनको इंडिपेंडेंस मिल गई जुलाई 4, 1776 को. The Americans in the 13 colonies formed independent states that defeated the British in the American Revolutionary War, gaining independence from the British Crown and establishing the United States of America as the first nation state founded on Enlightenment principles of liberal democracy. These were the original 13 colonies. So that is it for this part of the video. You may join the session for not for the upcoming exam. दिसंबर एग्जाम के एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं. जून एग्जाम के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू मे ज्वाइन द क्लासेस. यहाँ पर आप लिंक भी देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो का भी, जो कि कनेक्टेड वीडियो ही है. इसको भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.